हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज कर चुके हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम सभी सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल्स को एक पॉइंट से कनेक्ट करते हैं एंड नेगेटिव टर्मिनल्स को अनदर पॉइंट से। नाउ लेट अस सपोज वी हैव टू सेल्स, one is of EMF E1 and second of EMF E2 and इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 and second वन का इंटरनल रेजिस्टेंस है R2 and इनको हमने दो पॉइंट्स के बीच में पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। अब इन दोनों सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल B पॉइंट से कनेक्टेड हैं and negative terminals D point से connected हैं. Hence, these two cells are in parallel. Now suppose एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I1 एंड दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I2 फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स द जंक्शन B एंड करंट I फ्लोज आउट। अब जितना करंट अंदर जाएगा जंक्शन के उतना ही बाहर आएगा। Hence we can write that I is equals to I1 plus I2 and here also we have I1, here we have I2 and here we have I. अब क्योंकि दोनों सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स B एंड D, हेंस इन दोनों सेल्स के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। सो वी कैन राइट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ फर्स्ट सेल। फॉर फर्स्ट सेल, potential difference between the terminals of this cell will be V equals to VB minus VD because B point is at higher potential as compared to D point. So we have V equals to E1 minus I1 R1. Here E1 is EMF of this cell and I1 R1 is potential drop across this internal resistance of this cell. Now rearranging, we have I1 R1 equals to E1 minus V. इस V को उधर शिफ्ट कर दिया, so यहाँ से I1 कितना आ गया, E1 minus V upon R1 के इक्वल। And potential difference across this second cell will be, for second cell we have V equals to VB minus VD. यहाँ आ जाएगा E2 because इस सेल का EMF is E2 and potential drop across this internal resistance is I2 R2. So we have I2 R2. Now rearranging, we can find I2. So I2 R2 equals to E2 minus V. So यहाँ से I2 आ जाएगा E2 minus V upon R2 के इक्वल। Now substituting value of I1 and I2 in this equation, we have total current equals to, so total current I will be E1 minus V upon R1 plus E2 minus V upon R2. This is the value for I1 and this is the value for I2. Now rearranging or simplifying this, we have I is equals to E1 upon R1 plus E2 upon R2 minus V upon R1 minus V upon R2. So I is equals to E1 by R1 plus E2 by R2. Now taking V and minus sign common from these two terms, we have minus V 1 by R1 plus 1 by R2. अब इस टर्म को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे। So we have V 1 by R1 plus 1 by R2 equals to E upon R1 plus E2 by R2 minus I. Now simplifying this term, we have V, taking LCM we have R1 R2 in denominator and numerator में आ जाएगा R1 plus R2 after cross multiplying. And here taking LCM we have R1 R2 and न्यूमिनेटर में आ जाएगा E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1.
माइनस आई। अब इस टर्म को अगर हम दोनों साइड डिवाइड कर दें, सो वी हैव v इक्वल्स टू E1 R1 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। अब क्योंकि ये टर्म इधर आके डिवाइड होगी तो ये डिनोमिनेटर इधर आके न्यूमिनेटर बन जाएगा एंड ये न्यूमिनेटर यहाँ आके डिनोमिनेटर, माइनस आई सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो वी हैव पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू E1 R1 प्लस सॉरी दिस इज R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस आई R1 R2 upon R1 plus R2. Let this equation be equation number 1. अगर हम इस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को एक सिंगल सेल से रिप्लेस कर दें, जिसकी EMF is E equivalent and internal resistances are equivalent and current I flows through it. So उस केस में इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी V equals to EMF of this cell माइनस जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दैट इज आई इंटू आर इक्वलेंट। एंड लेट दिस इक्वेशन बी इक्वेशन नंबर 2. नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 2 with इक्वेशन 1, we get E equivalent equals to this term and R equivalent equals to this term. So we can write that E equivalent is equals to E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 plus R2 and R equivalent equals to R1 R2 upon R1 plus R2. इस रिजल्ट को हम और सिंपल वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, सो वी गेट E equivalent upon R equivalent equals to E1 R2 plus E2 R1 upon R1 R2, because ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी on dividing these two, and simplifying this we have E1 R2 upon R1 R2 plus E2 R1 upon R1 R2. So here R2 cancels, here R1 cancel out. So we get E equivalent upon R equivalent equals to E1 upon R1 plus E2 upon R2. And अगर हम इस टर्म का रेसिप्रोकल ले लें, then we have 1 upon R equivalent equals to R1 plus R2 upon R1 R2, and here we have R1 upon R1 R2 plus R2 upon R1 R2. यहाँ R1 cancel out हो जाएगा and here R2. So we have 1 upon R equivalent equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2. So we have these two final results in case of cells in parallel. अगर इस रिजल्ट को हम जनरलाइज करें फॉर n नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उस केस में ये इक्वेशन बन जाएगी फॉर n सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. We have E equivalent upon R equivalent equals to E1 upon R1 plus E2 plus R2 plus so on up to En upon Rn. Here En is EMF of nth cell and Rn is internal resistance of nth cell. And generalizing this result, we have 1 upon R equivalent equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus so on up to 1 by Rn. Here Rn is internal resistance of nth cell
which is connected in parallel. अब अगर हम m सिमिलर सेल्स को जिन सब की EMF E है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज R, इनको अगर पैरेलल में लगा दें बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, एंड लेट R बी द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट, क्योंकि सभी सेल्स पैरेलल में लगे हुए हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, हेंस देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, लेट इट बी R डैश, कितना हो जाएगा 1 बाय R डैश इक्वल्स टू 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस सो ऑन अप टू m टर्म्स, क्योंकि हमारे पास m नंबर ऑफ सेल्स हैं. So we have 1 upon R dash equals to m by R. So we have R dash, that is R equivalent equals to R by m. बट इस सर्किट में हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R भी है. सो टोटल रेजिस्टेंस विल बी in the circuit will be R plus R dash, and R dash is R upon m. So we have total resistance equals to R plus R upon m. जब सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं देन पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो टोटल ईएमएफ होती है वो होती है सिंगल सेल की ईएमएफ के इक्वल, क्योंकि ये सारे सेल्स बिटवीन सेम 2 पॉइंट्स कनेक्टेड हैं. हेंस वी कैन राइट टोटल ईएमएफ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन is equals to EMF due to single cell equals to E. Therefore, current in the circuit कितना हो जाएगा, I is equals to total EMF divided by total resistance in the circuit, and total EMF is E, अभी निकाला हमने, and total resistance is this R plus R by M. Now simplifying this we get current equals to ME upon capital R plus small r. यहाँ पे M आ जाएगा साथ में. ये कैसे आया, we take LCM here, डिनोमिनेटर में M आ गया और वो ऊपर चला जाएगा with E, एंड यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कैपिटल R से. सो वी हैव MR plus R. So this is the current in the circuit. Now we have two special cases. First case is if external resistance is much smaller than the R by M or than the net internal resistance of the cells. उस केस में क्या आ जाएगा, R plus R by M will be nearly equals to R by M, and current हो जाएगा equals to E upon R by M, and ये M ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. So we have ME by R, and this is nothing but M times current due to single cell, because this is the current due to single cell. So we can write in this case when external resistance is much smaller than the net internal resistance of the cell, इस केस में जो करंट आएगा that will be M times the current due to a single cell. And second case is
when external resistance is greater than net internal resistance of the cells. इस केस में R प्लस R बाई एम हो जाएगा नियरली इक्वल्स टू कैपिटल R एंड करंट हो जाएगा इक्वल्स टू E अपॉन कैपिटल R, बिकॉज इस केस में R बाई एम को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं. And this is current given by a single cell. So इस डिस्कशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट अगर हम सिमिलर सेल्स को पैरेलल में लगाएं एंड इन सेल्स के अक्रॉस हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लगा दें, इस केस में मैक्सिमम करंट तब होगा व्हेन दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच स्मॉलर देन द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स. बट सीरीज कॉम्बिनेशन में इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है. सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट तब होता है व्हेन R इज ग्रेटर देन द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स, जो सेल्स हमने सीरीज में लगाए हुए हैं. सो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल को, देन हमने मैक्सिमम करंट की कंडीशन भी ड्राइव करी एंड पैरेलल के केस में मैक्सिमम करंट तब होता है व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच स्मॉलर देन द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. नेक्स्ट वीडियो में हम मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को करेंगे. टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड टेक केयर. थैंक यू.